Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Quick recap of yesterday's session. Yesterday, we started with one very important concept that is arrow functions. In some languages, they call it as lambda functions, like in Python. So we discussed about what are arrow functions. Always remember, arrow functions are anonymous functions, means functions without name. They can have parameter, they have body, but generally the body is single line task. Okay, and that task is automatically returned. You don't even have to write return. No need to even write brackets for that body. Okay, and how that anonymous functions were previously done, and then how when arrow function came, then how we started doing it. Then yesterday we saw one application also where we can make use of lambda function or arrow function and how arrow functions are promoting declarative coding or functional programming. How it is reducing the traditional logics from programmer. Means programmer doesn't have to write that traditional logics. Someone else is writing it for you. Correct? So in that one we saw that is map. Now few more we have to learn today. That is filter function. So filter is also a array function, right? So suppose some array is given to you with some elements. There are different elements in that array. Okay. And you have some condition and you want to apply that condition on each and every array element. And those elements which satisfy that condition, only those element I want to put it into another array. Get it? So I'm going to filter it in short. Okay. So what will be done? There will be some condition and that condition will be applied on each element of that array. This is your array and X is each element from that array. And on each element we are applying condition. Those who are satisfying, they are filtered and they will come into another array. Get it? So only those which are satisfying that condition will be put into another array. Okay? So that work who does? Filter. So to filter, you just have to give the condition. What filter will do? It will apply that condition on each and every element of your array. And wherever the condition is coming true, only those element, it will put it into another array. And last, it will return you that filtered. Correct? So same thing, if filter is not there, then traditionally you will do that work. And how? With the help of lambda and with the help of filter, your code gets reduced. That too, I'll tell you. Okay? Now, for one or two examples, I'll show you the traditional way and with the help of lambda. In the next example, directly we'll start using lambda. Okay? See. Now, what I'm saying is I'm having some list. Okay, you want that the elements in the list can be modified, but the reference should not be modified. Then you can use const. Example, suppose I'm taking an example of strings you can take. It works on string also, not necessary. It is applicable only for numbers. Like suppose you are taking for numbers. Okay, so it is an array of numbers, suppose, right? 90, 89, 113, whatever, 445, 406, 120. Now what I want is all the elements which are even that I want to put it into another list. As many elements which are even that I want to put in another list. So for that, suppose traditional, this filter function is not there. Just one more example I'm trying to tell you to convey that how this filter function and lambda function is going to reduce the code from your side.
and how it is taking you towards the declarative logic. Declarative coding means you're understanding that you're just telling what to do. How to do is someone else going to do it. You don't have to bother about writing the entire algorithm. Okay? So suppose this filter is not there. Then you will write one function called easy1 to which you will be passing an element and it should just check whether it is divisible by 2 or no. X mod 2 double equal to 0. Is it clear? Is E1 is a function which is taking one number and it is just checking whether it is divisible by 2. How to check whether it is divisible by 2? Mod 2. X mod 2. If the remainder is 0, it is true. If the remainder is 1, it will be false. This is the function return. Done. I hope you got it. Now what I want to do is I want to create one another list in which only the even elements from this list I want to put. List means array. So I'm creating one more array called NOS. It can be also kept const, doesn't matter. Okay? Const even numbers equal to empty list. Is it right? Don't confuse as it is const. The reference cannot be changed. The element in the array can be modified. Understanding? In the array, you can add elements, you can delete elements. This reference cannot be changed, which is kept in that array. Now, traditional logic, what? You'll traverse this array one by one using a for loop. Which for loop? For of, see, for const x of NOS. Is this right? Const x of NOS. NOS is an array, right? One by one element is coming in that X. First time 100 will come, 45, 678, 123. That element I'll pass to easy1. And if easy1 returns true, I'll add it in this one. Okay? So what I'll check if easy1 X is coming true, then E1 NOS dot push X. Is this right? Is this traditional logic? This is the traditional logic which cannot be avoided. आज भी यही logic implement होता है. इतना ही है कि ये logic कोई और आपके लिए बना रहा है. Ultimately मुझे बताना क्या है कि अगर ये task किसी ने दिया रहता था कि ये एक list है, इसमें से जितने भी even numbers है उसको एक दूसरे list में डालना है. तो even checking के लिए आपने एक function लिखा. फिर आप ये list में से एक एक element traverse कर रहे हैं using a for loop. फिर एक एक एलिमेंट ये फंक्शन को भेजा. फंक्शन जब जब ट्रू रिटर्न कर रहा है वो एलिमेंट में इस अरे में डालो एंड देन यू कैन प्रिंट एंड सी बोथ. ठीक है? यू आर प्रिंटिंग योर ओरिजिनल अरे एंड कंसोल डॉट लॉग यू आर प्रिंटिंग दैट इवन नंबर्स. ठीक है? टास्क अचीव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है? नाउ इफ यू रन इट, कैन यू सी ये अपना ओरिजिनल है और इसमें सिर्फ कौन से नंबर्स आ गए ये ओरिजिनल अरे में से जितने भी E1 थे. मींस इन शॉर्ट फिल्टरिंग हुआ है ना. कैन यू जस्ट गिव मी Yes, कंफर्मेशन yes. यस और तो फिल्टरिंग हुआ. फिल्टरिंग कैसे हुआ कि हमारी एक कंडीशन थी E1, तो जहां जहां कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है वो एलिमेंट इसमें. बट ये सबके लिए हमें एल्गोरिथम लिखना पड़ा. मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि ये जो लेगेसी लॉजिक्स है, ट्रेडिशनल लॉजिक्स जो सालों साल चल रहा है, बट वो गायब भी नहीं हो सकता है, उसको रखना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंडिंग ना? जैसे 50 साल पहले भी कोलगेट था और आज भी कोलगेट लोग यूज कर रहे हैं. कोलगेट थोड़ी निकाले, दांत टूथपेस्ट के तौर पे कोलगेट है ही. 50 years बैक भी था, आज भी था. इट इज कंटिन्यूइंग. गेटिंग ऑन? तो सम थिंग्स आर देयर विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड. आपको यूज करना ही पड़ेगा. तो ऐसा ये लॉजिक है. ये लॉजिक उस कैटेगरी में. तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि ये जो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट के कोड्स है जो तुम लोग लिखते हो वो हम लोग लिखेंगे तुम्हारे लिए. यू जस्ट टेल व्हाट टू डू, हाउ टू डू इज आवर जॉब. तो अब ये पूरा काम कैसे रिड्यूस कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ विच फंक्शन? द फंक्शन विच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ ऑन द स्लाइड.
दैट इज फिल्टर, अरे का फिल्टर फंक्शन। तो देखो यार आई शो यू, अब ये कोड कैसे कम करेंगे हम लोग, ये तो मैं निकाल दूंगा, बट हमने निकाला तो ऐसा नहीं कि कोड कम हुआ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू कोड कम हुआ है। मीन्स किसके व्यू से वो कम है, स्क्रिप्ट मीन्स यहां जो स्क्रिप्ट हमने लिखे है उधर हमें वो कम दिख रहा है, बैकग्राउंड में वो कोड उतना ही जनरेट हुआ है, बट वो कोड किसी और ने जनरेट किया। वो कोड किसके अंदर बना हुआ है, फिल्टर फंक्शन। देखो nos डॉट फिल्टर, एंड आपको फिल्टर करने के लिए जो फंक्शन है वो फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करना है, तो आई पास दैट इज इवन। सी इज इवन कॉल नहीं हुआ है, इज इवन कॉल्ड या सिर्फ इज इवन फंक्शन का रेफरेंस पास हुआ है? is even function now getting called, or are we just passing the reference of that function? फंक्शन का नाम ही रेफरेंस होता है, फंक्शन का नाम ही एक फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है, कल बताया इट्स अ फंक्शन ऑब्जेक्ट, यू आर पासिंग द रेफरेंस ऑफ दैट फंक्शन, getting it is called as a first class object। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो किसी फंक्शन का रेफरेंस है दे आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, एंड जिसको पास करते हैं उनको हायर ऑर्डर फंक्शंस कहते हैं, getting। तो हियर व्हाट इज डन, एंड ऐसे टाइप के फंक्शन जो होता है जो सिर्फ हम डिफाइन करते हैं, वी आर नॉट कॉलिंग इट। कहीं भी कोड में मैंने कॉल किया इज इवन, प्रीवियस कोड में किया था क्योंकि मैंने वो फॉर लूप लिखा था। Here, am I calling is even, or is someone else going to call is even internally and again and again? And Yeah, who is someone going else to will call call. that is even internally again and again? Filter। Filter. तो ये जो फिल्टर फंक्शन है वो क्या करेगा, एनओएस के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ये इज इवन कॉल करेगा। मीन्स ये फिल्टर क्या करेगा, अंदर अंदर वही लॉजिक है जो अभी मैंने दिखाया था, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट, सॉरी एम्प्टी अरे क्रिएट करेगा, फिर ये इज इवन को रिपीटेडली कॉल करेगा फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एनओएस। एनओएस में 100 है तो इज इवन ऑफ 100, इज इवन ऑफ 45, इज इवन ऑफ 6 है, तो इट इज गोइंग टू कॉल दैट इज इवन इंटरनली अगेन एंड अगेन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ योर अरे। मीनिंग जो लूप मैंने लिखा था ना, for x in nos, if is even of x then even nos dot push, वो पूरा लॉजिक इसके अंदर है। तो इन्होंने अंदर एक एम्प्टी अरे बनाया, फिर nos पे एक लूप चलाया, एंड nos के ईच एंड एवरी एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल किया, और जब जब फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है तब तब वो एलिमेंट एक एम्प्टी अरे में डाल दिया, एंड लास्ट में वो अरे हमें रिटर्न किया जो हमने कलेक्ट किया हमारे इवन एनओएस में। अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? तो Yes, got it. कैन वी कॉल दैट इज इवन is a callback function? Callback function means functions which are defined by the programmer, but programmer doesn't call. It is getting called implicitly again and again, means someone else is going to call। तो थोड़े देर पहले जो मैंने फॉर लूप लिखा था वो पूरा फॉर लूप ये फिल्टर के अंदर इंप्लीमेंटेड है या नहीं? मीन्स वो जो लेगेसी लॉजिक मैंने लिखी थी वो ट्रेडिशनल लॉजिक कौन तुम्हारे लिए इंप्लीमेंट कर रहा है, फिल्टर। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इसको डिक्लेरेटिव कोडिंग क्यों बोलना चाहिए, कि यहां सिर्फ हम बोल रहे हैं कि प्लीज इस अरे को फिल्टर कर, मैं बोल रहा नहीं हूं कैसे फिल्टर कर, कैसे फिल्टर करना ये देख लेगा। I am just telling what to do. I'm not telling how to do. I'm telling please filter this array. And I'm just giving the condition of filtering. तो कंडीशन ये इजी वन। अब यहां ये इजी वन भी मैं कम कर सकता हूं बाय राइटिंग दिस लैम्डा फंक्शन ओनली ओवर हियर, क्योंकि एनीवे मुझे ये इजी वन फंक्शन बाद में कभी रीयूज नहीं करना है, मुझे ये वन टाइम पर्पस के लिए है, बस फिल्टरिंग करने के लिए चाहिए, थ्रो अवे फंक्शन, उसको थ्रो अवे फंक्शन कहते हैं या वन टाइम नीडेड फंक्शन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ फंक्शन विद अ नेम इज इवन, कैन आई राइट हियर ओनली अ लैम्डा फंक्शन विथ वन आर्ग्यूमेंट? व्हाट डू यू से? ऐसे लिख सकता हूं x mod 2 डबल इक्वल टू 0। कल मैंने बताया भी है कि जो भी एक्सप्रेशन लिखते हो
वो एक्सप्रेशन का रिजल्ट ऑटोमेटिक रिटर्न भी होगा, आपको रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं। ये खासियत होती है लैम्बडा की। तो यही जो फंक्शन मैंने विथ नेम लिखा था, उसको भी कम करके मैं यहीं के यहीं लैम्बडा फंक्शन लिख के पास कर दूं। इज दिस लैम्बडा फंक्शन डिफाइंड? सिर्फ डिफाइन हुआ है ये लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन मींस फंक्शंस विदाउट अ नेम, बट उस फंक्शन को भी रेफरेंस है, और वो रेफरेंस फिल्टर को पास किया। नॉर्मली हमने क्या किया रहता था, वो रेफरेंस से कलेक्ट किया रहता था ना, यस या नो? मैं इसे कलेक्ट करता था, इज E1 इक्वल टू ये लैम्बडा, चल जाएगा क्या? राइट साइड मैंने एक लैम्बडा फंक्शन डिफाइन किया, कितने आर्ग्यूमेंट का? 1 आर्ग्यूमेंट। वो रिटर्न क्या कर रहा है? जो आर्ग्यूमेंट है उसका मॉड 2 इक्वल टू 0 है कि नहीं चेक कर रहा है। और ये पूरा जो डेफिनेशन है उसका रेफरेंस मैंने किसमें कलेक्ट किया? EZ1। बट लैम्बडा के लिमिटेशंस भी है। जनरली लैम्बडा इज नॉट टू बी यूज्ड वेयर द लॉजिक्स आर वेरी लेंदी, देन व्हेन द कोड इज टू बी रीयूज्ड, रीयूजेबिलिटी करनी है तो लैम्बडा मत लिखो, फंक्शन विद अ प्रॉपर नेम लिखो। अंडरस्टैंडिंग? एंड लैम्बडा फंक्शन का एक लिमिटेशन है, इट कैन नॉट डू चेंजेस टू द सराउंडिंग वेरिएबल। गेटिंग? तो वो खासियत है फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। तो काफी एडवांटेज भी है, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। तो ऐसे डिफाइन करूंगा, उसका रेफरेंस कलेक्ट, एंड फिर ये रेफरेंस पास करूंगा। एक ही बात है ना गाइस? तो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग दैट रेफरेंस एंड देन पासिंग, कैन आई डायरेक्टली पास द रेफरेंस? या सोनो? ये लैम्बडा फंक्शन का रेफरेंस डायरेक्टली वहां पास कर सकता हूं क्या? नहीं। ठीक है? एंड प्लीज रिमेंबर, वो लैम्बडा फंक्शन भी कॉल बैक ही है। कॉल बैक मीन समझ में आया ना? A function which is defined by the programmer but getting called implicitly and again. ठीक है? तो is this filter going to call your lambda again and again for each element of NOS? पहली बार x में क्या जाएगा? 100 mod 2 ट्रू आ रहा है? यस, इट विल कीप इट इन वन एम्प्टी लिस्ट। 45 के लिए फॉल्स, 670 के लिए ट्रू, इट विल ऐड इट इन द एम्प्टी लिस्ट। एंड लास्ट में वो जो लिस्ट है जिसमें वो ऐड हुए हैं, वो लास्ट में लिस्ट रिटर्न होती है, वो इवन एनओएस में है, वो हमने प्रिंट किया। तो जस्ट चेक कर रहे हो कि प्रीवियसली जो कोड लिखा था वो कम करते करते मैंने एक लाइन पे लेके आया या नहीं, एंड विच इज डूइंग द सेम वर्क। चाहिए तो इसमें थोड़े और वैल्यूज ऐड करता हूँ, 420 ऐड करता हूँ, 1024 ऐड करता हूँ, राइट? सी, तो व्हाट यू गॉट टू नो फ्रॉम दिस? कैन यू टेल मी, थोड़े से कुछ ऑब्जर्वेशंस बता सकते हो? नॉट फ्रॉम द कोड, इन जनरल lambda and filter, and it's not necessary you can do filtering only of numbers, strings पे भी कर सकते हो। I'm waiting for your answer. Yes, basically we can reduce the line of codes and only for the declarative programming हाँ, where it is promoting towards, means ये promote किसको कर रहा है? Declarative coding. Declarative coding means you understanding, we are just telling yeah, what to do, we are not telling how to do. How is the responsibility of someone else, तो ये filter की responsibility है। हमने सिर्फ बोला है कि प्लीज ये अरे को फिल्टर कर, एंड फिल्टरिंग के लिए ये कंडीशन। फिल्टर बोल रहा है अभी आगे का मेरा काम है, चिंता मत करो। कह रहे मैं ये कंडीशन को हर एक पे अप्लाई करूंगा, जहां जहां ये कंडीशन ट्रू आएगा उन एलिमेंट्स को मैं एक और एक लिस्ट में रखूंगा, और लास्ट को आपको वो लिस्ट लाके देता हूं, आप चिंता मत करो। सेम थिंग एसक्यूएल वगैरह में होता है। अगर आपने एसक्यूएल पढ़ा है तो एसक्यूएल भी डिक्लरेटिव है, एसक्यूएल भी नॉन प्रोसीजरल है, इट इज डिक्लरेटिव। एसक्यूएल में देखो, आप सिर्फ कमांड्स आपके सर्वर को देते हो, जो भी आपका आरडीबीएमएस है, पोस्टग्रेस है, माइस्क्यूएल है, सिक्वल सर्वर है, वॉट एवर, तो यू जस्ट गिव द कमांड, वो माइस्क्यूएल वो कमांड एग्जीक्यूट करता है एंड रिस्पॉन्स देता है। यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट कि रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे करना है, रिकॉर्ड अपडेट कैसे करना है, रिकॉर्ड टेबल में से फेच कैसे करना है, वो डीबीएमएस देख लेता है। आप सिर्फ बोलते हो कि मुझे ये टेबल के ये रिकॉर्ड्स लाके दे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सिटी इक्वल टू पुणे। मैंने कमांड दिया, हाउ टू रिट्रीव ऑल द पुणे रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल इज द जॉब ऑफ डीबीएमएस। यहां भी वैसी है,
फिल्टरिंग कैसे करना है ये फिल्टर का काम है, ला के देगा. But ultimately, background, is it containing the same logic which we would have written in a traditional way? ट्रेडिशनल वे में Yes. जो लॉजिक लिखा रहता है वही है अंदर, से वो हाइड हो गया है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया. इट इज एब्स्ट्रैक्ट. करेक्ट. एंड वी आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ लैम्बडा, वन टाइम यूज फंक्शन, सिंगल लाइन टास्क, एनोनिमस फंक्शंस. ठीक है. तो अभी इसमें भी मैंने वो रिलेट करके दिया, ट्रेडिशनल लॉजिक प्लस ट्रेडिशनल लॉजिक वर्सेस डिक्लरेटिव वे यूजिंग लैम्बडा. अभी आगे के एग्जांपल्स में मैं लैम्बडा और उसका कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लैम्बडा यूज करना शुरू करूंगा. ठीक है. तो देखो, द फिल्टर मेथड क्रिएट्स अ न्यू अरे, इट विल गिव यू अ न्यू अरे विथ अरे एलिमेंट दैट पासेस अ टेस्ट. मीन्स तुम्हारे अरे में से उतनी एलिमेंट्स वो न्यू अरे में देगा जो उस टेस्ट को पास कर दे. गेट इट. यहां देखो एग्जांपल, अभी यहां मैंने डायरेक्टली लैम्बडा का यूज किया. अगर लैम्बडा फंक्शन, मैं लैम्बडा बोलता हूं, बट लैम्बडा बोलो या एरो बोलो, एरो. JavaScript generally uses word arrow function. To see, if your arrow function contains only one argument, there is no need to write this bracket also. Okay. So is this example filtering all even numbers? Is it going to call this lambda function again and again for each element? Will it call it for 45? 45 mod 2. Is it 0? No, false. 4 mod 2. Yes, true. It will put 4, 16. So in the result, you will get only 4 and 16. Get it? Applicable for other also. मैं तुम्हें चाहिए तो देखो, अगर हम एक const names लेते हैं, ठीक है, एंड थोड़े names ऐड करते हैं. ओके. तो I'll add some names. I'll add my name. Okay. Few other names also I'll add. Something. अब मैंने कहा कि इसमें से जितने भी नेम्स ए से शुरू होते हैं वो मुझे फिल्टर करना है. ओनली नेम्स विच आर स्टार्टिंग विथ ए, दैट आई गोइंग टू फिल्टर. ठीक है. तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट नाउ ट्रेडिशनल फंक्शन एंड फिर एक एक करके ट्रैवर्स, फिर हर एक को चेक करूंगा, फिर दूसरे लिस्ट, सब कुछ फिल्टर तुम्हें काम करके दे देगा. देखो, कॉन्स्ट मैं यहां देता हूं फिल्टर्ड नेम्स इक्वल टू नेम्स डॉट फिल्टर एंड कंडीशन देखो एक्स. ठीक है. एंड एक्स डॉट स्टार्ट्स विथ ए. तो जब भी एक्स डॉट स्टार्ट्स विथ ए, मुझे ए वाला चाहिए. इज दिस लैम्बडा फंक्शन क्लियर? ये लैम्बडा फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है. ये फंक्शन डिफाइन हुआ है एक आर्ग्यूमेंट का, और वो अंदर चेक कर रहा है कि x स्टार्ट्स विथ a. यस तो ट्रू, नो तो फॉल्स. ये लैम्बडा फंक्शन का रेफरेंस फिल्टर को पास हुआ. फंक्शन ऑब्जेक्ट है, इट इज पास्ड, एंड देन फिल्टर विल कॉल योर लैम्बडा फंक्शन अगेन एंड अगेन फॉर ईच एलिमेंट इन नेम्स. ठीक है. एंड जहां जहां सेटिस्फाई हो रहा है वो एक और एक लिस्ट में रखेगा, एंड दैट इट इज रिटर्निंग. नाउ इफ आई राइट कंसोल dot log names and console dot log filtered names, just check करो. ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक लेंथ, जिसका लेंथ मोर देन 5 है उनको ही दो, या जिनका लेंथ 5 एंड 10 के बीच में ही है. मैंने 5 लेंथ टू 10 लेंथ के अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स आते हैं उतने ही चाहिए, तो आप वैसे कंडीशंस दे सकते हो. ठीक है. ओके. सी, can you see? Is it filtered only those which are starting with A? तो कैसे एक लाइन में काम हो रहा है, बट प्लीज हमारे लिए वो दिख रहा है एक लाइन, बैकग्राउंड में वो पूरा ट्रेडिशनल कोड वही है. गेटिंग. बट मॉडर्न जावास्क्रिप्ट क्या कहता है कि प्रोग्रामर का बर्डन कम करना है, प्रोग्रामर को ज्यादा से ज्यादा डिक्लरेटिव वे से फैसिलिटी देनी, प्रोग्रामर से बताते जाएगा क्या करना है.
कैसे करना है वो और कोई कर लेगा, तो वो कैसे ये फिल्टर कर रहा है। फिल्टर के अंदर वो पूरा लूप वगैरह रहेगा, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, लूप लूप में ये फंक्शन कॉल करेगा, जब जब ट्रू है वो एम्प्टी लिस्ट में ऐड करते रहेगा, लास्ट में वो लिस्ट हमें रिटर्न, सब कुछ लॉजिक अंदर इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट इट। देन फिल्टर कंसेप्ट क्लियर है। फिर और थोड़े एप्लीकेशन है जिसमें हम लैम्बडा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज reduce. तो सपोज यू वांट टू reduce the values of your array to a single value. ठीक है, एक array है आपके पास and you want to summarize that value and produce one single value for those all elements. So summarizing means anything it can be. It can be total of all. Yes or no, guys? It can be average of all. It can be maximum. It can be minimum. So many things it can be. Okay? But you want to summarize all that values to a single value. Okay? Then use reduce. Okay? Now how reduce works. Reduce will also take a lambda function as an input. Actually हम लोग lambda देंगे, reduce बोलता है मुझे lambda देने की जरूरत नहीं, एक टू आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन भी दे दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो we will be passing what to it, हम लोग उसको पास क्या करेंगे, लैम्बडा, एक टू आर्ग्यूमेंट। इनका कहना है कि यू कैन पास अ फंक्शन, बट फंक्शन मीन्स फंक्शन का रेफरेंस, प्लीज याद रखना है, फंक्शन ऑब्जेक्ट पास करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑब्जेक्ट वी आर पासिंग, एंड सच फंक्शन विच इज टेकिंग टू आर्ग्यूमेंट्स। गेट इट? एक में रहेगा करंट वैल्यू और एक में रहेगा रनिंग टोटल, मीन्स अब तक एक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या आ गया, ऐसे टू आर्ग्यूमेंट वाला वो फंक्शन होना चाहिए। तो इफ यू हैव डिफाइंड इट ऑलरेडी विद टू आर्ग्यूमेंट, वो फंक्शन का नाम दे सकते हो, या यहीं के यहीं लैम्बडा लिख सकते हो, वेर लैम्बडा इज मोर प्रिफर्ड, राइट? तो इट विल टेक टू आर्ग्यूमेंट्स, वन विल बी द करंट वैल्यू एंड अनदर इज द करंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू। अब तक कितना एक्यूमुलेट हुआ है वो एक, और एक में करंट वैल्यू, और ये फंक्शन अगेन एंड अगेन कॉल होगा फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू इन योर अरे, and it will keep calling this function again and again. First time क्या pass करेगा? First time the first two values, next time the next value and the previous total, next value and the previous total. This will it go on and last call का जो value है वो हमें return करेगा as a reduced value or summarized value. Get it? So the working is how, that I'll show you one by one. बट इन शॉर्ट reduce कब यूज करना है, जब आपके array को समराइज करके उसका एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, इफ यू वांट एन एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यू, सम ऑफ ऑल द वैल्यू, or you want max from that, or you want min from that, getting, then use reduce. Okay, the reduce method runs a function. This function can be lambda or your defined function. आपका डिफाइन किया हुआ फंक्शन भी हो सकता है या वो एक लैम्बडा भी हो सकता है, on each array element, and it is going to call that function again and again on each array element, and at the end it is going to return you one summarized single value as result. Okay, then how it works from left to right in the array, आपके array का left to right लेते जाएगा। Then method does not reduce the original array. Original array intact रहेगा. It will just summarize all that value and give you the single value as output. ठीक है? देखो इसमें कैसे वर्किंग है। numbers dot reduce, और ये मैंने फंक्शन लिखा है टू आर्ग्यूमेंट फंक्शन। इज इट अ लैम्बडा फंक्शन और एरो फंक्शन? टू आर्ग्यूमेंट, गेटिंग, जिसमें पहले में रहेगा करंट एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड ये करंट वैल्यू, अंडरस्टैंडिंग, करंट वैल्यू एंड द करंट एक्यूमुलेटेड, अब तक जितना एक्यूमुलेट हुआ है वो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम इट विल बी 0 and 45. First time when it will call, it will be 0 and 45. It will take the total.
45. So next time total will be 45 and value will be 4. 49. So next time total will be 49 and value will be 9. This way, again and again it will call. That's what the speciality. यही तो खासियत है कि इट इज अ डिक्लरेटिव वे. आपने सिर्फ फंक्शन बोल दिया है, ये reduce इस फंक्शन को अगेन अगेन कॉल करेगा फॉर ईच वैल्यू एंड एट द एंड वॉट एवर इज द समराइज्ड लास्ट रिजल्ट दैट इट विल रिटर्न. Getting? See, last 99 you will get. So how it is going to call your lambda function? देखो ऐसे कॉल करेगा 0, 45 for the first time. What is the action in it? Total plus value. So total is 0, value is 45, 45. Now that addition is returned. वो return करता है. Again call करेगा. But again call करते हैं previous answer यहाँ आएगा and next value लेगा. That is 4. Again इसका addition जो 49 है वो, ठीक है, and next value. Getting? 58 and 16. Getting? फिर 74 जो भी आता है प्लस 25 एंड लास्ट कॉल का जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा. Getting guys? 74 and 25 which will be 99. ओके अब ये तो टोटल है. इस केस में अगर ये सब स्ट्रिंग्स रहते थे तो यू कैन गिव द इनिशियल वैल्यू. यहाँ इनिशियल वैल्यू देने का प्रोविजन भी है, सीड वैल्यू. If you want to give some initial value, so to reduce, you can pass initial value as well. And it is not necessary, it is to be applied only on numbers. Strings पे हो सकता है. Getting? It can work on strings also. Okay? Numbers पे चल रहा है, मैंने already बताया. array3.html tag. Okay? Const nos equal to some numbers I'll take. 10, then 5, then 20, then 12, then 15, 25. Okay. And now I want sum. Const sum equal to nos dot reduce. ठीक है? Reduce and we have to pass a callback function. मैंने already कहा है callback function is a function which is defined by us but getting called implicitly again and again. ठीक है? Okay? Okay, I'll write that callback function. एक में तो क्या रहेगा? Total. Total नहीं, इसमें हाँ पहले तो total ही रहता है. Total means जो accumulated value है. Okay, next is value equal greater. Total and then value. And what action you are doing? Total plus value. You can check what value has come. console.log. यही काम ट्रेडिशनल वे से भी कर सकते थे. मैंने कहा खुद लॉजिक लिख सकते हो. अगर मैंने कहा इसका टोटल निकालो तो यू विल राइट, यू विल टेक वन सम इक्वल टू 0, फिर इसको एक एक करके ट्रैवर्स करोगे तो 0 प्लस 10 10, देन 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 20 35. ऐसे खुद लूप लिखते थे ना, वही इंटरनली हो रहा है. someone else is writing the logic for you. Get it? See, is it returning 87? I think you can give initial value. Reduce को देना है. It is to be given to इतना तो अपना lambda function है. This is your lambda function. You can define a two argument function and just pass its reference. ऐसा भी चलता है.
बट क्यों लिखने का, जब ये थ्रो अवे फंक्शन है, बाद में मुझे लगने वाला नहीं है, जस्ट ये रिड्यूस पर्पस के लिए चाहिए, तो यूज लैम्बडा। करेक्ट। सी, you can give initial value. So by default initial it takes 0, but here we have given initial as 100. So whatever 87 we got in that 100, that is 1. And you can do it for strings and all also. Like for example, they could just say const names equal to, we have some names, okay? Tom, Bob, Alice, okay, Ram, Sita, Jack. ओके, मुझे क्या करना है, इन सब नेम्स को ऐसे डैश 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 से ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनानी है। इन सबको ज्वाइन ज्वाइन, एक्चुअली वो ज्वाइन करने के लिए भी रेडी फंक्शंस बना के रखे हैं, बट स्टिल रेडियस से मुझे वो काम करना है। ठीक है, कॉन्स्ट सर, कॉन्स्ट एस इक्वल टू एनओएस डॉट reduce, राइट, एंड यहां एक्यूमुलेटेड रिजल्ट आएगा, एंड ये करंट वैल्यू है, राइट गाइस, एंड व्हाट एक्शन आई हैव टू डू, whatever is the accumulated value प्लस बीच में एक डैश एंड प्लस वैल्यू। ठीक है, क्या कॉन्कैटिनेट होगा, अब तक का जो एक्यूमुलेटेड रिजल्ट है उसको डैश और अभी की करंट वैल्यू। इज इट गोइंग टू कॉल दिस अगेन एंड अगेन? यस। इसको भी आप इनिशियल दे के रख सकते हो। तो इनिशियल अगर आपने एम्प्टी दे के रखा है, एम्प्टी, तो इट विल वर्क। एम्प्टी दिया तो इधर रॉन्ग होगा, एम्प्टी नहीं देता है तो देखते हैं कैसे वर्क होगा। ओके, बट व्हाट वी आर डूइंग टिल नाउ, वॉट एवर वी हैव गॉट, उसको एक डैश एंड करंट वैल्यू, ये वैल्यू में हर बार वो एक एक आते रहेगा, एक बार टॉम, एक बार बॉब, एक बार एलिस, लाइक दैट। ठीक है, यू कैन डिस्प्ले console.log s, the final result, whatever you are getting. See, NOS names चाहिए था। See, is it joined all one by one? There is no need to give initial also. Getting? So in this case, what it is doing, एक्चुअली वो कैसे कॉल करता है, देखो, आई टेल यू हाउ इट कॉल्स। यहां हमने 100 दिया है एज अ इनिशियल, बट एक्चुअली वो कॉलिंग सीक्वेंस ऐसे, सी, फर्स्ट टाइम इट कॉल्स फर्स्ट टू वैल्यू 10 एंड 5, और उसका रिजल्ट जो रहेगा दैट इज 10 प्लस 5, वो रिटर्न होगा जो नेक्स्ट टाइम 15 एंड 20, लाइक दैट। इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, नाउ दिस इज 15 प्लस 20, so whatever the result come, that is one argument and the next value. This way it does. So every time what it does, the current accumulated and the next value, current accumulated next. But for the first time it takes the first two value. ठीक है, सेम थिंग यहां भी होगा। फर्स्ट टाइम क्या लेगा, टॉम एंड बॉब, एंड वो ज्वाइन होकर आता है, फिर व्हाट विल कम इन टोटल, टॉम डैश बॉब, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, एलिस। तो प्रीवियस रिजल्ट को एलिस ज्वाइन, फिर वापस प्रीवियस रिजल्ट को राम ज्वाइन, एंड ज्वाइन करके फिर आपको फाइनल स्ट्रिंग देता है। कैन यू सी? ठीक है, here also if you want you can give some initial, like suppose I'm giving initial as Ganesh। ठीक है, सी, तो नाउ फर्स्ट टाइम इट विल कॉल इन प्लेस ऑफ टोटल क्या रहेगा, गणेश, एंड वैल्यू में टॉम रहेगा, तो गणेश एंड टॉम ज्वाइन हो जाएगा, गणेश एंड टॉम विद अ डैश ज्वाइन हो गया, दैट विल बिकम नेक्स्ट टाइम टोटल। नेक्स्ट टाइम टोटल में क्या आने वाला है, गणेश डैश टॉम, एंड व्हाट विल द नेक्स्ट वैल्यू, बॉब। अगेन ये दो
ज्वाइन हो जाएंगे गणेश, टॉम, डैश बॉब, एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट वैल्यू? एलिस। ऐसे फिर ये और ये दोनों डैश से ज्वाइन होकर न्यू रिजल्ट, ऐसे रिपीटेड कॉल करेगा, एंड एट द एंड लास्ट कॉल के समय जो रिजल्ट है वो हमें लाके देगा, दैट इज इन एस, दैट वी आर प्रिंटिंग। ठीक है, तो दिस वे यू कैन reduce your array to a single value using the reduce function. ठीक है, the reduce method can accept an initial value, तो आपको चाहिए तो वो इनिशियल वैल्यू दे सकते हो। ठीक है, तो आई गेव एन एग्जांपल, सी यहां मैंने इनिशियल 100 दिया था, यहां इनिशियल गणेश दिया। जब इनिशियल नहीं दिया तो इट टुक दिस फर्स्ट टू वैल्यू ओनली ओवर हियर, टोटल में टॉम है एंड वैल्यू में बॉब, ज्वाइन होकर वापस टोटल और नया वैल्यू एलिस, ज्वाइन होकर वापस टोटल नया वैल्यू राम, लाइक दैट। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। फिर थोड़े और फंक्शंस हैं जिसमें भी अगेन आप लोग किसका यूज कर सकते हो, लैम्बडा का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंड। फाइंड विल रिटर्न यू द फर्स्ट एलिमेंट विच satisfies द टेस्ट कंडीशन। आप एक टेस्ट कंडीशन दोगे, जो फिल्टर के लिए कैसे दिया था, फिल्टर के लिए तो ऐसे ही आप एक टेस्ट कंडीशन दोगे, एंड विच एवर एलिमेंट satisfies that test condition, it will return that element, the first element. ठीक है, see the find method returns the value of the first array element that passes a test condition, whatever test, like आपके array में numbers है, ठीक है, तो मुझे वो पहला वैल्यू चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है। मे बी here we have 4, here we have 9, then we have 20, here we have 52, एंड फिर आगे वापस कम ज्यादा वापस 50 से ज्यादा वाला भी हो सकता है, बट मुझे फर्स्ट एलिमेंट चाहिए जो ग्रेटर देन 50 है, फर्स्ट एलिमेंट। गेटिंग? तो यू कैन यूज दिस फाइंड, से ए डॉट फाइंड लिखोगे, राइट? फिर आप लैम्बडा लिखोगे, वन आर्ग्यूमेंट लैम्बडा, एंड चेक क्या करोगे, एक्स ग्रेटर देन 50। Now, can you tell me, is it going to call this lambda again and again for each element of A? Can you tell me yes or no? ये lambda again and again call करेगा क्या? Lambda is a callback function, guys. It is getting called implicitly. So is it going to call this arrow function? मैं lambda बोलता हूँ because I have habit from Python. So here we call it as arrow. Even Java also we call it as arrow. Is it going to call this arrow function again and again for each element of A? And wherever it gets this true, will it stop over there and return that element? Yes or no, guys? Quickly tell me. Yes, it will When it return. called for the first time, x is 4. Will it check, is 4 greater than 50? No. 9 greater than 50? No. 20 greater? No. 52? Yes. Stop over there and return that value. That element it will return. So it is going to call this lambda function or arrow function, more specific arrow, because JavaScript literature uses word arrow. Is it going to call this arrow function again and again for each element? And for first element, where the condition come true, it will stop there and return that element. Get it? Now, instead of lambda, you can write a function with some name also. Function check, which takes one argument, and then inside you'll write return x greater than 50. Can we do like this? And then instead of lambda, can I give this name, just name? ये check name दे सकता हूँ कि नहीं? तो will this find call your check function again and again for each value of a? But क्यों पहले से एक function define करने का? This is a lengthy process, ना? Function name, function name, parameter, bracket, then the body, then whatever thing it is written, you have to write a written code. Can you reduce this whole thing to a single line logic by using arrow? कितना precise, concise हो जाता है एक लाइन।
But remember, lambda is defined and the reference is passed to find. Find को उसका reference चला जाएगा. ठीक है? Yeah, देखो example. I want the first element which is greater than 10. First element which is greater than 10. So it will apply this arrow on each element. So what will come in element for the first time? 5. Is 5 greater than 10? No. Next time 12. Is 12 greater than 10? Yes. Stop there and return that 12. Understanding? Clear? तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं, नेम्स पे लगा सकते हो. एग्जाम्पल देखो, आई एम गोइंग टू डू इट ऑन दिस ओनली. I want the first name which is of file length. Now, you may have file length, Sita is also there and Alice is also there. But I want the first name which is of length 5. Okay? So console.log. Here only I'm writing names dot find. Okay, x arrow x dot length greater than or equal to 5. Okay? Okay, now you can run and see. Five greater than equal to 5. No length. This is string. String doesn't have length as a property. Length array को होता है. String को length method होता है, guys. Very sorry for that. ठीक है? Length is a method. This is a string. Each element is a string. So string is having a length method. Okay? X dot length is not a function. For string we have length only. A length property. If it is a property, then x greater than equal to 5 should work, right? Names dot 5 x dot length greater than equal to 5. This is 5 length only. No, it is now returned. Okay. Length is a property only. Length is a method of string in Java. Many times it becomes confusing when you're working on different languages. X dot length, this property only, it is property. So first time will it pass X as Tom? Will it keep calling this function again and again? Yes. So first time Tom. Tom's length is not greater than. Bob. No. Alice. Yes. Stop over there and return Alice. Okay. Then we have find index. Same, but instead of returning the element, it will return the position of that element. The first element which is satisfying that condition, it will return its position. Index. It will return the index of it, which is passing that test condition. So in the same example, if I write find index, will it return 1 instead of 12? 12 नहीं रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा? 1. ठीक है? तो find index method returns the index of the first array element that passes test condition. Meaning वो element जो ये test condition satisfy कर रहा है, उसका position रिटर्न, और इसमें वो element ही रिटर्न होगा. ठीक है? See, same example लिया. Now tell me which is the first element which is satisfying this condition? 12. So what is the position of 12? 1. It is returning 1. Okay, see, I'll put in this only. Instead of find index. Now, in case of this, what it will return? Will it return 2? Yes or no, guys? Alice. Alice is satisfying that criteria. So instead of returning Alice, it will return the position of Alice. Okay? See, 2.
and just check if it doesn't satisfy that criteria. Then it may be returning -1. See, when it doesn't satisfy that criteria, it returns -1. Here also, if it doesn't satisfy the criteria, it returns undefined. When no one is satisfying that criteria, it returns undefined. And when no one is satisfying the criteria, it returns index -1. So this thing also you should know, because everything I don't put on the slide. Okay? On the slide, maybe failure cases I have not given, but you should know that in failure case, what does it return? Okay? Then suppose you want to reverse your array. Like first element should become last, second as second last. Then we have a reverse method. Reverse array order. See, numbers dot reverse. In place reversing, it does in place. ओरिजिनल अरे ही क्या हो जाएगा? रिवर्स होगा. इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न यू अ न्यू रिवर्स्ड अरे. नया रिवर्स्ड अरे रिटर्न नहीं करेगा. ओरिजिनल अरे में ही रिवर्स करने वाला है. ठीक है, तो सपोज मैं इसी में ये नेम्स का जो अरे है उसको रिवर्स करते हैं. कंसोल डॉट लॉग नेम्स, then names dot reverse, and then console dot log names. See, is the order changed? Tom has become last, Bob has become second last, Alice but last. तो ऐसे ऑर्डर रिवर्स कर सकते हो. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट वी हैव एवरी. ये एक देख लेंगे. फॉर टुडे वी विल टेक ओनली दिस मच, एंड देन फ्यू मोर आर रिमेनिंग. फ्यू थोड़े से और है, वो भी खत्म करेंगे नेक्स्ट टाइम, so that array part will get over. Then we have to dive into date, and date part है. Then objects, अपने खुद के objects कैसे बनाने हैं, all that also we have to see. So array dot every. Now it will also take one test condition, a test function, and if each and every element of your array satisfies that test, it will return true, otherwise false. Getting? It will take one lambda function. You have an array, whatever values are there, 8, 7, 15, 20. Okay. And you're applying some test function on these element. And if every element is satisfying the test condition, then you'll get answer true. Every is going to return only two output, true or false. Getting? So a dot every, and I'm having some test condition. So that test condition I'll write as an arrow function, common sense. And I want to check whether everyone is odd, suppose odd. हर एक जन odd है क्या देखना है. ठीक है, तो आई एम राइटिंग x mod 2 डबल इक्वल टू 1. ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट पे ये टेस्ट चलेगा. फर्स्ट x में क्या आएगा? 8. बट 8 mod 2 1 नहीं है, फेल. यही फेल हो गया, स्टॉप. डायरेक्टली इट विल रिटर्न फॉल्स. बट सपोज ये 8 के जगह पे है 9. So is 9 odd? Yes. Is 7 odd? Is 15 odd? Is 20 odd? No. Again false. 20 की जगह पे 21 है. True. Is everyone odd? Yes. Then final answer will be true. In short, it is applying the condition on every element. And if each and every element is satisfying the condition, you will get answer true. Otherwise, false. ठीक है, सी द एवरी मेथड चेक्स इफ ऑल अरे वैल्यू पास अ टेस्ट. एंड वो टेस्ट कैसे लिखोगे? बाय अ लैम्डा फंक्शन. सी, लाइक आई वांट टू फाइंड आउट, आई वांट टू जस्ट चेक वेदर एवरीवन इज इवन. ठीक है, लेट नंबर्स इक्वल टू दिस थिंग, numbers dot every. Okay, this is the element mod 2 equal to 0.
थ्री इक्वल का खासियत क्या है? डेटा टाइप भी चेक करता है. इट चेक्स द डेटा टाइप एज वेल. ओके, तो टेल मी, इज each and every element satisfying this test? Yes, therefore true. सेकेंड केस में देखो, एक एफ फाइ है, फाइ डजंट सेटिस्फाई, therefore you get false. एवरी का आंसर ट्रू आने के लिए ये कंडीशन सबके लिए ट्रू आना चाहिए. अंडरस्टैंडिंग? यू कैन अप्लाई इट फॉर नेम्स ऑल्सो. लाइक नेम्स में मुझे चाहिए, आर एवरी वन एग्जैक्टली ऑफ कॉन्स्ट, नेम्स वन आई टेक, आर एवरी वन एग्जैक्टली ऑफ थ्री लेंथ. ठीक है, टॉम, बॉब, टिम. ठीक है, टॉम भी है ना, टिम में टॉम. I want to check whether everyone is of three length. Okay, so console.log names one dot every, and what will be the condition? X arrow x dot length exactly equal to 3. Okay, so what do you say in our case? Will the answer come true? First time X is Ram. Ram dot length is 3. Yes. Bob, 3. Tim, 3. Tom, 3. Everyone is 3. Therefore, the ultimate final answer is true. See, is the final answer true? इसमें से एक कोई तो थ्री लेंथ का नहीं देता है, लाइक जैसे बिल दिया. ओके, सी द आंसर बिकम्स फॉल्स. So I hope you got it. Is it right? Can you give me quick confirmation about every? तो every है वैसे some भी है. Every है तो उसका opposite some. Okay. Every is like and, anding. Condition and कर रहा है. And anding में सब true है तो ही true. Like that. ठीक है? तो few more are there that we'll be learning in the next session.